हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2026 की जो रिक्रूटमेंट है मैनेजर जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 8 बिजनेस इकोनॉमिक, जिसमें डिमांड सप्लाई इन्फ्लेशन एंड नेशनल इनकम के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो है वो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए प्रोफेशनल नॉलेज की पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 12 सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कवर किए हैं 10,000 प्लस। जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्राइस चेंज, सेकंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज, थर्ड चेंज इन इनकम ड्यू टू डिमांड एंड फोर्थ चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज, बिकॉज इलास्टिसिटी मेजर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नेक्स्ट सेकंड a movement along the demand curve occurred due to change in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इनकम ऑफ कंज्यूमर, सेकंड टेस्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, थर्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ एंड फोर्थ पॉपुलेशन साइज। तो करेक्ट आंसर है थर्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, बिकॉज चेंज इन ओन प्राइस कॉज मूवमेंट along with the demand curve while other factors shift the curve। Next, third, when demand increase due to increase in consumer income, it result in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मूवमेंट अपवर्ड अलोंग डिमांड कर्व, सेकंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट टू द डिमांड कर्व, थर्ड राइटवर्ड शिफ्ट टू द डिमांड कर्व एंड फोर्थ नो चेंज इन डिमांड कर्व। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड राइटवर्ड शिफ्ट टू डिमांड कर्व, बिकॉज हायर इनकम इंक्रीज डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। नेक्स्ट फोर्थ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड other things remaining constant and increase in price of commodity generally leads to। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, सेकंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, थर्ड इंक्रीज इन डिमांड कर्व एंड फोर्थ नो चेंज इन डिमांड। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड शो एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। नेक्स्ट फिफ्थ, a commodity having elasticity of demand less than 1 is called। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट परफेक्ट इलास्टिक, देन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड एंड यूनिलैटरल इलास्टिक डिमांड। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इन इलास्टिक डिमांड, बिकॉज क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस प्रोपोर्शनेटली लेस देन द प्राइस चेंज। नेक्स्ट सिक्स, according to the law of supply keeping other factor constant and increase in price result in। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिक्रीज इन सप्लाई, second increase in quantity supplied, third shift in supply curve left and fourth no relationship with supply। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड increase in quantity supplied, because producer supply more at higher price due to profit incentive। नेक्स्ट सेवंथ, market equilibrium occur when। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डिमांड इज मैक्सिमम, सेकंड सप्लाई इज मैक्सिमम, थर्ड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल क्वांटिटी सप्लाइड एंड फोर्थ प्राइस बिकम जीरो। तो करेक्ट आंसर है थर्ड क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, बिकॉज इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट। नेक्स्ट एट, इन्फ्लेशन रेफर्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, सेकंड सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, थर्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन ओनली एंड फोर्थ डिक्रीज इन मनी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड सस्टेन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, बिकॉज इन्फ्लेशन रिड्यूस परचेसिंग पावर ऑफ मनी। वैसे देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट 25 चैप्टर प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस दिए हैं। जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट नाइन्थ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स मेनली ड्यू टू। तो एक ऑप्शन है फर्स्ट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर सप्लाई, सेकंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड रिडक्शन इन मनी सप्लाई एंड फोर्थ इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ओनली। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड ओवर सप्लाई, बिकॉज टू मच डिमांड चेसिंग लिमिटेड सप्लाई क्रिएटेड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 10, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड इंक्रीज इन कंज्यूमर सेविंग, थर्ड रिडक्शन इन वेजेस एंड फोर्थ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट
increase in production cost because rising input costs like wages and raw material increase prices. Next 11 GDP measure. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इनकम अर्न ओनली बाय सिटीजन अब्रॉड, सेकंड टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, थर्ड टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओनली, एंड फोर्थ टोटल मनी सप्लाई इन इकोनॉमी. तो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड total value of final goods and services produced within a country because GDP measure domestic production during a given period. Next 12th, the difference between GDP and GNP is related to. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट फॉरेन इनकम फैक्टर, टैक्स रेट, इन्फ्लेशन रेट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट फॉरेन इनकम फैक्टर. GDP include net factor income from abroad while GDP does not. नेक्स्ट 13 नॉमिनल जीडीपी डिफर फ्रॉम रियल जीडीपी बिकॉज. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट नॉमिनल जीडीपी एक्सक्लूड प्रोडक्शन, सेकंड नॉमिनल जीडीपी यूज बेस ईयर प्राइजेस, थर्ड रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस, एंड फोर्थ रियल जीडीपी इग्नोर इन्फ्लेशन. तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस बिकॉज रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइजेस टू रिमूव इन्फ्लेशन इफेक्ट. Next 14. If inflation rise significantly while income remain constant, the purchasing power of consumer will. तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट increase, decrease, remain unchanged and become zero. तो करेक्ट आंसर है सेकंड decrease because higher price reduce the quantity of goods and service consumer can buy. Next 15. Which of the following is included in national income calculations? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट sale of second hand goods, second transfer payment like pension, third value of final goods and services, and fourth purchase of intermediate goods only. तो correct answer है third value of final goods and services because only final goods and services are included to avoid double counting. वैसे देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस के लिए पीडीएफ अवेलेबल है, मैनेजर फाइनेंस, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड सभी सेक्शंस के लिए पीडीएफ अवेलेबल है. जिनको भी पीडीएफ परचेस करना होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए. तब तक के लिए धन्यवाद.